Hi, I'm really sorry. Due to some technical error, we are continue the class again. Okay, we are discussed last about the Abraham Maslow's hierarchy. Okay, Abraham Harlow, the Maslow suggested the theory of human motivation and a theory of motivation, the need of hierarchy. So we are discussing about need of hierarchy and the Maslow's theory is based on only the deficit principle and progressive principle. Uh, Progressive principle. The deficit principle is the satisfied need no longer to motivate behavior because people act to satisfy deprived needs. मतलब the deficit. Uh, So next one is a progression principle. Progression principle. This is a five needs we identified exist in a hierarchy, which means that a need at any level only comes into the play after a lower level need has been satisfied. मतलब deficit principle मतलब satisfied need no longer motivates behavior because मतलब satisfied need no longer motivates behavior because people act to satisfy deprived needs. And progression principle, the five needs to be identified exist in the hierarchy, which means that a need at any level only that comes into the play after lower level need has to be satisfied. So the need is defined as the physiological psychological deficiency that a person feels the compulsions to satisfy, and this need can be created tension that can influence the person's work, attitudes, and behavior. Maslow formed a theory based on his definition of need that the process of humans proposed that humans are motivated by the multiple needs and that these needs exist in the hierarchical order. His premise is the only and the unsatisfied need can influence behavior. A satisfied need is not a motivator. So the next one is the you can see a hierarchy pattern. That's a triangle we already studied in the first year. The first one is mortality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, experience of lack, self-actualization. This is the least need. So the first one is physiological. Physiological is the broad spectrum we can see in the downwards of the triangle. That is breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, and excretion. These are the basic need of a human being. That's the broad part. That's why the broad according to the need a priority of the needs, so that it will come into the next one. Safety, security of the body, employment, resources, mortality, the family, health, property. This is the safety. Love and belonging, friendship, family, sexual intimacy. That's a love and belonging. This is the third one. And esteem, self-esteem, confidence, achievement, and the respect of others, respect by others. Self-actualization, mortality, creativity, spontaneity, and problem-solving, lack of prejudice, acceptance of facts. These are the, and you can see a higher level needs and to satisfy the offer मतलब कैसे के satisfied कर सकते हैं. Higher level of needs, self actualization needs, creative and challenging work, or participation of decision, nothing. Extreme is job flexibility and autonomy and responsibility of an important job, promotion of higher status of job. Lower level needs to satisfy offer. Lower level needs में क्या क्या, social needs, that is a friendly co-workers, interaction with the customers, and the pleasant supervisor. And safety needs, safe working conditions, and job security, pays, compensation, and benefits. Physiological needs, rest and refreshment breaks, physical comfort on the job, reasonable work hours. These are the the Maslow hierarchy of human needs we will discuss. And the second one is the Douglas Magros theory of motivation. Douglas Magros theory of motivation. The eminent psychological psychologist Douglas Magro, and has given his theory of motivation called theory of X and theory of Y. What is theory of X? Theory of X is based on the traditional assumptions about the employees. Here, the conventional approach of the management is used as a base.
Theory of why, the based on the modern and progressive professional approach. Here the assumption, employee and quiet. And the next one is an assumption theory X. Average human being inherently lazy and nature and decided to work as little as possible, and he avoids the accepting of the responsibility, prefer to held the direct by others. मतलब he avoids accepting responsibility and prefer to led or direct by others. मतलब किसी से सुने. He is a self-concentrated and indifferent to organizational needs. He has a little ambitions, dislikes responsibility, prefer to be lead but wants security. He is not very intelligent and lack of creativity is solving organizational problem. He by nature resistant to change any of any type. And the theory of X, in the case of such employees, self motivation is just not possible. Just not possible. And just not possible. 1 second, we will continue in case of such employees, self-motivation is just not possible. They will work only when there is a constant supervision on them. A manager has to pursue, punish or reward such workers in order to achieve organizational goal. Assumption of theory Y. theory Y क्या होता है देख लेते हैं हम. theory Y ये होता है the average human natural as a play. The work is natural as a play provided the work environment is favorable. People can be self-directed and creative at work if they are motivated properly. Self-control on the part of people is useful of achieving organizational goal. External control and threats of punishment along to be bring the force. The X is only the personal, they are the personal motivated, just like that. And people are not the nature passive and resistant to organizational. The average human being learns under the proper condition. He is also willing to accept the responsibility. Next one, the theory we are discussing, assumption of the theory we are discussing is the Heisenberg's of the two-factor theory. Heisenberg's का two-factor of theory है. In this two-factor theory, Herzberg identified two sets of factors that impact motivation in the workplace. Hygiene factors include the salary, job security, working condition, organizational policies, and technical quality of the supervision. Although these factors do not motivate employee, they can cause dissatisfaction if they are missing. Something as simple as adding music to the office place or implementing the non-smoking policy can make the people less dissatisfied with less aspect of their work. मतलब हाइजीन फैक्टर, मतलब हर्सबर्ग टू फैक्टर थियरी में क्या क्या होता है. तो हाइजीन फैक्टर होते हैं एक तो इंक्लूडिंग द सैलरी, जॉब सिक्योरिटी. मतलब किस तरीके से हम मोटिवेट हो सकते हैं, मतलब इंक्लूड द सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, organizational policies, the technical quality of the supervision. Although these factors do not motivate employees, they can cause dissatisfaction if they are missing. Sometimes a simple adding music to the office place or implementing a non-smoking policy can make the people less dissatisfied with these aspects of their work. Next one, satisfies and motivators. मतलब satisfies and motivation में क्या रहेगा? It includes the such things as the responsibility, achievement, growth opportunities, and feelings of recognition, and are the key to the job satisfaction and motivates. For example, manager can find out what people really do in their jobs and make improvements, thus increase the job satisfaction and performance. मतलब जॉब करने वाले लोगों को satisfied है, कैसे हमको motivate कर सकते. Following the Herzberg two-factor theory, the managers need to ensure that the hygiene factors are adequate then build satisfaction in the job. मतलब पहले hygiene factors मैंने maintain हो रहे कि नहीं हो रहे देखने के बाद अपन को build satisfied in the job. Satisfaction and dissatisfaction ये दिखाता है, ठीक है. That is the achievement of growth, recognition, responsibility, hygiene, compensation, friends and supervision, work condition. These are the motivators and hygiene में main difference है, ठीक है. उसके बाद में हमारा next theory है Alderfer ERG theory. Clayton Alderfer ERG theory, that means existence, relatedness and growth theory is built upon the Maslow's hierarchy of needs. मतलब Maslow's hierarchy of needs के हिसाब से ये इसका accordingly ये theory बना हुआ है. Existence of needs मतलब the are desire for the physiological and material well-being in terms of Maslow's model.
एक्सिस्टेंस ऑफ नीड्स इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, मतलब मास्लोव्स का थियरी का नीचे वाला जो दो ब्रॉड पार्ट है मतलब प्रायोरिटीज नीड में। एंड रिलेटेडनेस नीड्स में आता है आर डिसाइड फॉर सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इट टर्म्स मास्लोव्स मॉडल रिलेटेडनेस, करस्पॉन्डेंस और सोशल नीड्स में लोगों को मिलजुल कर रहना है, ये सारी चीज़ में रहने वाला। ग्रोथ नीड्स में आर डिसाइड टू कंटिन्यू द साइकोलॉजिकल growth and development in terms of Maslow's models. Growth and needs includes the esteem and self-realization of need. Next one is where is Taylor's? Taylor's theory of scientific management. Taylor's theory of scientific management. Frederick Winslow Taylor, 1856 to 1917, put forward that the idea that the workers are motivated mainly to pay. His theory of scientific management argued the following: the workers do not naturally enjoy work and so need the supervision and control, and therefore the managers should break. One second. The manager should break down the production in the series of small tasks. मतलब big अगर task अगर दे रहा है तो छोटा इसमें देना है ऐसा करके. And workers should be given in the appropriate training and tools so they can work as efficiently as possible on one set of tasks. These are the first ये. उसके बाद में workers are then paid according to the number of items they produce. मतलब workers कितना काम करे उस हिसाब से उनका prices और rate पे करना है. As a result of workers are engaged to work hard and maximum their productivity. वर्क hard and मतलब इसमें रिजल्ट ऐसा कैसे बनाएगा, अब ज़्यादा उसको ज़्यादा काम करने ज़्यादा पैसे दिए तो ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा. Taylor's methods are widely adopted in the business, so the benefit of increase the productivity level and the lower unit cost. ठीक है. The most of the notably advocated was Henry Ford, who used to term the design the first ever production line, marketing Ford cars. This was the start of the era of mass production. उसका बाद में है the workers. इसका बाद में the Mayow's theory of human relationship. Mayow's theory of human relationship क्या होता है हम देख लेते हैं. Mayow's theory of human relationship. Elon Mayo, 1880 to 1949, believed that the workers are not just concerned with the money, but could not be better motivated by having their social needs. And met when realized that the work was something that Taylor ignored. He introduced the human relationship school of thought, which focused on the management, taking more one interest in the workers, treating them as the people who have worthwhile opinion and realizing with the workers enjoy interacting together. मतलब आपने जो पहले से डिस्कस किया हुई है. Mayo conducted as a series of experiments at the Hawthorne factory of the Western Electric Company, शिकागो में इनने बहुत बार ये किया गया. ठीक है. He isolated the two groups of women workers and studied the effect of their productivity level, changing the factors such as lighting and working condition. He expected to see the productivity levels decline as the lightning or the others condition because the progressively worse. And what he actually discovered surprised him. That was the whatever the changes in the lighting or working condition, the productivity level of the work improved and remained the same. मतलब अपन उसमें लाइट करने का टाइम और वर्किंग कंडीशन थोड़ा मेंटेन करने का प्रोडक्टिविटी बढ़ा हुआ है और ऐसा करके चेंजेस हुआ है. From this, Mayo concluded that workers are best motivated by better communication, greater manager involvement and working in a group or teams. मतलब अकेले वर्क करने से ज़्यादा जब मतलब जो सब मिलजुल के काम करने में और एक गुड मैनेजर के हिसाब से और बेटर कम्युनिकेशन से हमको इसका काम बढ़ा सकते हैं. हमको एक बार और देख लेते हैं. बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर्स. Hawthorne workers were consulted over the experience and also the opportunity to give the feedback. And greater manager involvement, the employee working leaves hardware worker responsible increase the level of attention they were receiving. मतलब मैनेजर अच्छे से ध्यान वगैरह दे रहे, उनको अच्छे से ये कर रहे तो उसमें भी हमको कर सकता है. And working in a group of teams, मतलब Hawthorne workers did not previously regularly work it stems. ऐसा करके मतलब ये चेंजेस उसको Mayo concluded उन्होंने एक्सपीरियंस में किया है. The last one, the
मैक्स लर्लांड द मैनिफेस्ट नीड थियरी ऑफ मोटिवेशन, मतलब डेविड सी मैक्स लर्लांड proposed his achievement motivation theory, also called manifest need theory. ठीक है, according to him there are certain needs that are learned and socially acquired as the individual interacts with the environment. Max Lund classified such needs into the three broad categories. मैगलन से मैनिफेस्टो मतलब डेविड का थियरी के हिसाब से देर आर थ्री चेंजेस किया गया है उन्हें, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ अफिलिएशन एंड नीड ऑफ अचीवमेंट। पहले से नीड ऑफ पावर, किसी को अगर काम करने उसको पावर दे दी, इस तरीके से वो काम कर रहे तो उनको पावर देना है, पावर देना है, पावर देना है, पावर देने के बाद में उसका अफिलिएशन देना है और नीड ऑफ अचीवमेंट देना है। मतलब अफिलिएशन मतलब आपको उसमें काम करने में उनको ये दे दो, मतलब जब क्या बोलते हैं उसको अफिलिएशन, मतलब आप रिटर्न मतलब उनको इन आपका मान पावर दे, मैंने उसको पावर दे दो, नीड ऑफ अचीवमेंट। सो इसमें व्हाट द एम्प्लॉई नीड्स, एम्प्लॉयर वन मेंटेनेंस एंड मोटिवेटर्स, मतलब मेंटेन करने वाला मेंटेनेंस एंड मोटिवेटर्स चाहिए उनको, मतलब काम करने का टाइम। इसमें ऐसा कैसे मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस ये होता है वर्किंग कंडीशंस, मेंटेनेंस मतलब वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसीज़, कंपनी अच्छा वाला काम करने की सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, और वर्किंग कंडीशंस अच्छे से दे रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी अच्छे से दे रहे, पे एंड बेनिफिट्स अच्छे से, रिलेशन विद द को वर्कर्स वो भी अच्छे से दे रहे, सुपरविजन भी अच्छे से दे रहे, स्टेटस ऑल्सो, ओके। and these are the and creating the motivational climate, creating the motivational climate climate क्या है, the organization are more likely to install want to attitudes in the people if they nurture three factors, namely I belong feelings, can do, and the I am responsible, I am allowed, and mindset. And people are likely to adopt that the value of others help them meet their needs and belongings and the competence and autonomy. People need to valued by others, so surrounded by the cohesive peer group and given the sense of belonging in the control. The simulations of clear, challenging goals and recognize the whatever they achieve. The sense of connection with the organization, the sense of connection with the organization कितना वो लोग essentially connected है, and the more likely to develop the sense of loyalty and identity with it, मतलब कितना अच्छे से loyalty हम identify कर रहे हैं, so the efforts to promote the social engagement and essential, इसलिए वजह से अच्छे से काम करने के लिए मौका मिले। The current model of motivation tend to concentrate on the cognitive process, assuming that competence is the primary factor, and social goals are strong predictors to success, the promotion or socially responsible behavior of the result in the higher performance. The social climate is a powerful motivator of all aspect of behavior. ठीक है, ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी मतलब डिस्कस किया। मतलब द वर्किंग क्लाइमेट कैन बी categorized with the four types. Autonomy, they can estimate the over productive climate. Other can have a autonomy crushing climate, the resulting is no sense of autonomy. Autonomy हिसाब से अगर काम करने नहीं दिया तो मतलब उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा. So more accountability stress over the autonomy, इसलिए accountability अच्छे से autonomy में आ जाएगा. The more managers will download the pressure to the colleagues through a command climate for emphasis control. Thirdly, an over competitive prove yourself atmosphere make the exposing climate where the confusion provocation, मतलब तुम क्या कर सकते हैं ऐसा वाला मतलब एक प्रोवोकेशन में उन लोगों को मेंटली स्ट्रेस होकर दिक्कत आ सकते हैं. एंड फीडबैक इज एसेंशियल, feedback essential है, and the feedback is essential and ingredient to provide the information and that the less others know how they are doing. मतलब जो feedback है मतलब जो अपन को उसमें निकालना है क्योंकि मतलब लोगों को क्या जानकारी निकालना है. This is a motivational powerful tool yet often the least well used. This is the motivation powerful yet often the this is about the giving the information about the progress increases self एफिशिएंसी, नॉट अबाउट द एंकरेजिंग आरोगेंस. आरोगेंस बढ़ाने के लिए नहीं एनकरेज करना है हमको तो फीडबैक लेके. हाईली मोटिवेटिंग पीपल प्रेस अदर्स, मतलब ज़्यादा मोटिवेट करने वाला लोग क्या करते हैं, प्रेस दूसरा का तारीफ़ करना है, मतलब अच्छा काम किया तो उनको तारीफ़ करना है. एन एफर्ट एंड हाउ दे आर टैकल देयर वर्क एंड द मेक ऑफ कोलीग्स फील रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस. मतलब अगर दूसरे लोग अच्छे से काम करें मतलब उनको तारीफ़ करके उनका रिस्पॉन्सिबल को जैसे उनका कामयाब को जैसे हुआ अच्छे से सक्सेस हुआ उनको करने में उन लोगों को अच्छे से मतलब ये आएगा. ये है हमारा मोटिवेशनल ये चीज़ है. इसमें हमको मतलब किसी का कुछ डाउट है तो एक बार मोटिवेशन इसे डिटेली हम मतलब जो अपन वो किया तो ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया है, इंट्रोडक्शन क्या है हमने देख लिया है. बहुत
अच्छे से हमने किया है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव्स ये है, अंडरस्टैंड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ ट्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ, मतलब ये चैप्टर का हमारा ये है, अंडरस्टैंड द पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ कंसेप्ट एंड ट्रेंड्स, डेवलप द एम्बोडी डिसाइड, ठीक है। डेफिनेशन, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया, उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग टू एक्शन, प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव और मोटिव स्पेशली फॉर एन एक्ट, और एक्ट को नहीं तो हमको प्रोवोट करने के लिए, प्रोवाइडिंग करने के लिए, मोटिव करने के लिए करना है, ऐसा करके है। ड्राइविंग फोर्स विद द इंडिविजुअल बाय द विच दे अटेम्प्ट टू अचीव सम goals in order to fulfill the some, ठीक है। दीज आर द मेन गोल इन ऑर्डर टू फुलफिल, ये डेफिनेशन है। इसके बाद में 3 मैटर्स क्या क्या है, द एनर्जाइजिंग द ह्यूमन बिहेवियर एंड व्हाट डायरेक्ट्स द चैनल्स टू द बिहेवियर, हाउ द बिहेवियर मेंटेन। कॉम्प्लेक्स है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल थिंग है, मोटिवेशन एक फिजिकल थिंग है, मोटिवेशन इज ए यूनिक टू ईच एंड एवरी, ये है। ये सारी चीज़ हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद कंटेक्स्ट सेंसिटिव मतलब क्या होता है हमने वो भी देख लिया है। उसके बाद में 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हमने देख लिया। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, इंसेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक। इंसेंट्रिक मतलब द मोटिवेशन दैट ड्रिवन बाय एन इंटरेस्ट, मतलब अपना खुद का अंदर के एक इंटरेस्ट को जैसे मतलब प्रोडक्टिव होने वाला मोटिवेशन है, दैट इज इंसेंट्रिक मोटिवेशन। मतलब एक्सिट विद इन द इंडिविजुअल, एंड एक्सेंट्रिक मतलब कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ। एग्जाम्पल हमने बता दिया था, मतलब अपन कोई रिवार्ड के हिसाब से, मतलब इसके बाद में टाइप्स ऑफ हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद में 7 मेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हमने देख लिया है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, एंड इंटरनल मोटिवेशन, एप्लीकेशन मोटिवेशन, कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन, एटीट्यूड्स ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद में बहुत सारा थियरीज हमने डिस्कस किया है। आप लोगों को किसी का कुछ डाउट है, कुछ है तो पूछ सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपन को ये वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ऑल फॉर अ गुड